Good morning, students. So we are back with our same chapter of your third standard, and I am your English teacher. As you know, you can see my clip below your screen, and let's start. Have you opened your books, children? So start opening your books, and we are going to start our chapter on the third page. So let's begin our further explanation. This was the first page. Second page, and you have seen that Monu is very sad to hear from his papa that poacher have come to kill the Renu. Now let's see what happens to Renu. Now can you see my cursor, children? Okay. Next day, what happened next day? Monu goes to the jungle with his father to the Renu once again. नेक्स्ट डे वो जहाँ रेनू था वहाँ फिर से गए फादर और मोनू दोनों साथ, बट शी इज़ नॉट देयर. रीनू जो थी जो भी है, रीनू इज़ नॉट देयर. मोनू लुक्स फॉर द रेनू को इधर उधर देख रहे हैं मोनू. ही फाइंड्स दैट द रीनू इज़ ट्रैप्ड इन अ डिच. रीनू पहले कहाँ मिला था मोनू को? मड में. बट नाउ रीनू इज़ इन अ डिच, ट्रैप्ड. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैप्ड? हम जब किसी को पिंजरे में बांध देते हैं कहीं पर ताकि वो इधर उधर ना जा सके, उसको हम ट्रैप बोलते हैं. ट्रैप्ड इन अ डिच. रीनू पिंजरे में तो आ नहीं सकता या आ नहीं सकती, बहुत बड़ी होती है जानवर वो, तो उनको खड्डे में वो ट्रैप कर लिया. डिच मीन्स बड़ा सारा खड्डा. ओके, अ बिग होल डिग्ड अंडर इन द ग्राउंड. हर बेबी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर. और उनकी बेबी उनके पास खड़ी हुई थी. ओके, सो द बेबी इज क्राइंग फॉर द मदर. नाउ व्हाट हैपेंस? व्हाट मोनू इज गोइंग टू, हाउ मोनू इज गोइंग टू हेल्प रीनू एंड द बेबी ऑफ रीनू? द विलेजर्स मूव असाइड. मोनू's father, what happens? Monu's father calls some villagers and together they dig another trench. वो निकालने के लिए मोनू के फादर ने क्या किया रीनू को डिच से, क्योंकि रीनू तो बहुत भारी होती है, हम ऐसे तो नहीं पिकअप कर सकते उनको खुद चल के आना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, मोनू के फादर विलेज में गए और बहुत सारे विलेजर्स को लेके आए. एंड व्हाट दे डिड, दे डिग अनदर ट्रेंच. A trench is like a big hole in the ground, but it is a long deep होल. मीन्स एक रास्ता बना देते हैं, खड्डा बना के रास्ते जैसा लॉन्ग होल बोला जाएगा जिससे चल सके हम. तो ट्रेंच बनाया जो लॉन्ग होल बोलते हैं, खड्डा जैसा. बिसाइड द डिच के साइड में ही वो ट्रेंच बनाया उन्होंने, लॉन्ग होल इन द ग्राउंड. द ट्रेंच इज लाइक अ पैसेज सो दैट द रीनू कैन कम आउट. सी यू गॉट द मीनिंग ऑफ योर ट्रेंच ओवर हियर इटसेल्फ. द ट्रेंच इज लाइक अ पैसेज होता है जो लॉन्ग रोड जैसा होता है, खड्डा बीचों बीच में. वो कहाँ से अटैच था? डिच के साथ अटैच था. नाउ व्हाट हैपेंस? कम डाउन टू योर थर्ड क्लिप over here on your page 3. Can you see my cursor? The villagers move aside to allow the Renu to come out. Villagers जब ट्रेंच उन्होंने डिग कर दिया, खोद डाला, तो वो लोग ट्रेन से थोड़ा दूर हट गए ताकि रीनू बिना डरे आ जाए बाहर. बट द रीनू डजंट मूव. रीनू बाहर नहीं आ पा रही थी. क्यों? लेट्स सी. एवरीबडी इज़ वरीड. रीनू ट्रेंच के साइड से नहीं आ रही थी. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे आऊँ, क्या करूँ, जानवर है ना. ओके, व्हाट हैपेंस? मोनू स्टार्ट्स प्लेइंग हिज पाइप. मोनू ने क्या सडनली सोचा, और सडनली उन्होंने अपना पाइप जो उनके फादर ने बनाया था वो प्ले करने लग गए, म्यूज़िक देने लग गए. हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप. वो म्यूज़िक कैसी थी? बहुत मेलोडियस थी, बहुत स्वीट म्यूज़िक थी. तो स्वीट म्यूज़िक को हम क्या बोलते हैं? मेलोडी ऑफ द पाइप. द रीनू स्टैंड्स अप. रीनू डिच के में जो थी वो खड़ी हो गई, बैठी हुई थी ना खड्डे में, खड़ी हो गई. एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच. और डिच से बाहर कहाँ से आ गई? ट्रेन से, पैसेज से आ गई. नाउ व्हाट हैपेंस? मोनू गोज ऑन प्लेइंग द पाइप. मोनू अपनी मेलोडी पाइप जो थे वो प्ले ही करे जा रहे थे, बजाए ही जा रहे थे. स्लोली द रीनू डिसअपियर्स deep into the jungle
along with a baby. और वो धीरे धीरे पाइप की म्यूजिक सुन सुन के रीनू क्या किया, रीनू ने, रीनू अपनी बेबी के साथ जंगल में चली गई, डीप जंगल में. So wasn't it is a happy ending? We got the Monu helped with the help of his father. Monu helped the Reenu and his baby to go back to their jungle. So wasn't it a very good ending for us children? Yes, it's a happy ending. Now children, we are going to look at the oral question answers. So here are some oral questionnaires. Let's begin with your oral, and your oral question answers have your first sentence which you have to read loudly these words for me so that you can get the pronunciation of these words better. Okay, read these words loud. Sturdy. Sturdy means which cannot be moved from its place. Sturdy means which is rigid, not flexible. So say, repeat again, sturdy. Absorbed. Absorbed means when you are engrossed in some work, you are absorbed in it. You don't know what's going on. Absorbed. Poachers. Poachers are the people who kills the animal for their personal purpose or sell the animals from the jungle. They trap the animals from the jungle and they sell them. Poachers. Ditch. Ditch is a big hole which is digged in the ground. So have you got the pronunciation of these words? Sturdy, absorbed, poachers, ditch. The second sentence, just see the second question. How old do you think Monu is? Now let me ask you children, how old are you in your third standard? Very good. You all are 8 or 9 years old. So Monu is also, you can just assume he may be 8 or 9 years old. Very good. What is the second question over here? What does Monu learn to play? Monu ने क्या play करना सीखा? Pipe, बांसुरी. Very good. Now let's discuss this multiple choice questions. Take the correct answer in each. There are 4 question answers are given and 4 questions are given. For each there are how many options given in front of you? Some have, I think so, no, we are having 3 only, A, B and C. So let's see. The first question, what is matching with it? What does Monu finds in the jungle? Jungle में मोनू को क्या मिला? A horn, B, a pipe, or C, a hollow piece of bamboo? Yes, very good. It's a hollow piece of bamboo. Let's see the second one. Monu asks his father to use the bamboo piece to make a dash for him to play musical notes. So what does your hero of this lesson told his father or papa to make for him out of that bamboo piece? What he told his father to make for him? Pipe, A, B, drumstick, or C, guitar? Very good. It's your pipe, basuri. Let's see the third one. How does the jungle change as Monu plays the pipe? Let's see the options. A, it becomes dark, it looks dangerous, and C, it gets filled with flowers. So what is the correct option? Very good, you got it correct. It gets filled with flowers. Flowers उगने लग गए थे उनकी melodious music से, बांसुरी की. Let's see the last sentence of this multiple choice questions. The Reenu has wept eyes because she is, उनकी रोती हुई आँखें थी. wet मतलब भीगी हुई आँखें, रो रही थी वो. तो क्यों थी उनकी आँखें भीगी हुई? Because she is happy, खुशी के मारे वो आँखें भीगी हुई थी. या in pain or suffering from an eye infection? Very good children, you gave the right answer. It's your in pain. So your Reenu was in pain. That's why her eyes were wet. Let's discuss this 3 questions also so that I can complete your this page. Read and answer. You are going to read this question, read the lesson and answer them perfectly. What's your first question? Where is the Reenu trap? Reenu trap कहाँ हुई हुई थी?
ditch में थी. Okay, very good. So you gave the answer, and even I instantly gave you the answer. It's your ditch. So in your sentence, how you are going to write? Reenu is trapped in a ditch, khadda. Okay. Let's discuss the second question. What helps the Reenu to stand and come out of the ditch? Ditch में जो trap हुई थी रीनू, उनको किस चीज़ ने खड़ा कर दिया, क्योंकि वो बैठी हुई थी ना डिच में, तो किस चीज़ ने उनको खड़ा कर दिया और तुरंत वो बाहर भी आ गई. ओके, ट्रेंड से. It was the melodious music played by Monu with his pipe. Very good, children. I'll give you the right answer sentence. First, let's discuss. Okay, let's see the last question of this page. Where does Monu roam around and how? Monu कहाँ पर घूमते रहते थे और कैसे घूमते रहते थे? So we have your first page. There is the answer over there. Okay, so this is the answer. Let's discuss, let's see my answer, then you can give me your answer and I'll correct your answer. Monu used to roam around in the village in a very easy form. He had nothing in his mind, so he was just roaming around the village, and when he was roaming around the village, what he got? Let's see in your next video. Then furthermore questions which we have in our next page, we'll discuss this later on in our next video. Till then, children, you are going to read the lesson again, you are going to mark or underline the words which you didn't understood, and let me know your queries on my WhatsApp number. Till then, have a nice day, have a nice reading. Goodbye.